हरि ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ पंचदशोध्यायः. இன்னைக்கு புருஷோத்தம யோகம். இதில் நம்ம படிக்கலாம். ஒவ்வொரு வேர்டாக நான் சொல்லித்தரேன். எப்பவும் போல நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஊர்த்வமூல மதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராஹுரவ்யயம் சந்தாம்சி यस्य पर्णानि यस्तं वेदस वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा वृषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्दधानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नरूपमस्येह तदोपलभ्यते नान्दो न चार्दिन च सम्प्रदिष्टा नान्दो न चार्दिन च सम्प्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मूला हाइफन मूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तद पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गदान निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यद प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संजैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्. சரியா? ஈஸியாக தான் இருக்கும். படிக்க படிக்க வந்துடும். சொல்லுங்க. ஊர்த்வமூலமதசாகம் அஸ்வத்வம் प्राहुरव्ययम् ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्यान्यनुसन्दधानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधस्तमूलान्यनुसन्दधानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्दधानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्दो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा न रूपमस्येह तदोपलभ्यते नान्दो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्येह तदोपलभ्यते नान्दो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्चैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तद् द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्चैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तद् निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्चैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तद् हरि ओं श्री कृष्ण परमात्मने